Next, it is a MCQ. MCQ पता होना चाहिए हम लोग को. The standard deviation of the first n natural numbers is, your options are A, it is the whole root of n square minus 1 upon 12. Option B, it is the whole root of n into whole root of n into n plus 1 upon 12. So, number 3, under root of n into n minus 1 upon 6. Option D. None of this. याद करो मैंने ये फॉर्मूला दिया था तुम लोग को. The standard deviation of the first n natural number is given correct. जिसने बड़ा लेक्चर्स अटेंड किया और जिसने होमवर्क किया बड़ा सिंसियरली, उसको ये तुरंत पता चल गया होगा. नेक्स्ट, right on. Next, if the mean and the coefficient of variation of the marks of 10 students, if the mean and the coefficient of variation of the marks of 10 students is 20 and 80 respectively, what will be the variance of them? Your options are A, 256, option B is 16, option C is 25, option D none of these. Why? It is so easy. You are being known with the coefficient of variation, and you are being known with the arithmetic mean. तो आराम से आंसर आ सकता है. Here the value of the mean x bar is equal to x bar का वैल्यू 20,
कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल टू 80। तो आराम से फॉर्मूला आएगा ना बड़े देख। चलो कौन बताएगा बड़ा फॉर्मूला? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन मीन इंटू 100। ये देख लो तुम लोग के पास कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन और मीन है भाई, तुम लोग को वो सिग्मा मिल जाएगा। चलो सिग्मा मिला बड़ा, ओवराइंस भी मिल ही जाएगा। आंसर आ गया बड़ा सब लोग को? क्या आंसर आया? सबको यही आंसर आया था बड़ा? वेरी गुड। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बड़ा वो थियरी है बड़ा, थियरी। इफ द सेम अमाउंट is added or subtracted from all the values of an individual series, then the standard deviation and the variance both shall be, your options are A, change, B, unchanged, C, same, D, none of this। और बड़ा याद रखना तुम्हारे पास अब कोई लाइफ लाइन नहीं है बड़ा, विदाउट लाइफ लाइन तुम लोग को बड़ा आंसर देना है मुझे। चलो बच्चे बोलो, सारे बोले, प्यार से बोलो। अरे कितना टाइम लेगा, कितना टाइम लेगा? एकदम इजी है। स्टैंडर्ड डिविएशन एंड वैरिएंस वैल्यूज they are been added and subtracted, values they are been added and they are been subtracted। तुम लोग को नहीं समझा क्या क्वेश्चन? बड़ा स्टैंडर्ड डिविएशन एंड वैरिएंस they are based upon बड़ा dispersion। Dispersion is not affected by the shift of origin, bro. It is affected only by the change of scale, bro. So answer is बड़ा option B। अब जिसने भी बड़ा ये आंसर दिया है कौन है? दिशा। मुझे ये बताओ चलो बड़ा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म शिफ्ट ऑफ ओरिजिन? पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है?
प्री एग्जाम ऐप के साथ। बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। यस, तो बड़ा डिस्पर्शन जो है, इट इज नॉट affected but by doing the addition or subtraction. चलो आगे। 2017 जून में। चलो ये देखो, राइट द क्वेश्चन बोलो। The rates of return, the rates of return from the three different shares are 100%, 200%, and 400% respectively, and 400% respectively. The average rate of return will be, your options are A, 350%, B, 233.33%, C, 200%, option D. लोग रेडी हो? चलो भाई फटाफट फटाफट बड़ा मुझे आंसर दो यहाँ पे। फटाफट बड़ा आंसर दो। Which average बड़ा is used for calculating the बड़ा average rate? पार्थ, योर आंसर इज रॉन्ग पार्थ। मैंने थियरी में पढ़ाया था बड़ा तुमको ये। For calculating the average rate, very good Utkarsha. We use the बड़ा geometric mean. चल भाई, so in that case, geometric mean, it is equal to
It is a cube root of x1 into x2 into x3. So correct. Option C is answered. Next number. Thirdly, if the geometric mean is 6, geometric mean is equal to 6. Arithmetic mean is 6.5. Is 6.5. And the harmonic mean is equal to harmonic mean is equal to K. K. Geometric mean का square is equal to arithmetic mean into harmonic mean. बराबर है? चलो फटाफट देख लो your options are A, square upon square upon 6.5. Option B है 6 upon 0.5 square. Option C 6 upon